Good morning, dear friends. Welcome back to my channel, The Achievers Education. My name is Ritesh. So, the topic today which we are going to discuss is how federalism is practiced. This is the topic of the chapter called as Federalism. It's part 3, alright, and then the topic we have how federalism is practiced. चलिए आज हम देखेंगे कि फेडरलिज्म जो है ये चलन में कैसे आता है. Okay, in any of the country, how can we make it work in our country? How do we practice this thing? Let us begin. So, yes. Now, there are some points that I would like to read in front of you, which say these are the preconditions. Now, we cannot say preconditions, but these are the basic points, okay, which tells us the fundamental grounds of practicing federalism. Let us see what is that. Constitutional provisions, okay, the topic heading is how federalism is practiced. See what it says. Constitutional provisions are not necessary. Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. See, simply by having a constitution in our country, it will not lead to the success of federalism. अगर मेरे देश में constitution है और मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मेरे constitution के बदौले I'll be able to run federalism in my country, no, it will not be possible. ऐसा नहीं हो सकता. Then what do we need? See what it says. If the federal experiment has been succeeded in India, it is not merely because of the laid down constitutional provisions. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा बनाने के कारण मेरा कंट्री में फेडरलिज्म अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो रही है. इट इज ऑल्सो बिकॉज कि किस प्रकार की पॉलिटिकल सिस्टम हम लोग फॉलो कर रहे हैं. ओके, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम आर वी फॉलोइंग, उसके कारण फेडरलिज्म हमारा बहुत सक्सेसफुल हो रहा है हमारे कंट्री में. ऑलराइट, किस प्रकार की पॉलिटिक्स हम लोग, पॉलिटिकल सिस्टम को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसी वजह से हमारा फेडरलिज्म सक्सेसफुल हो रहा है. दिस एंश्योर दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकेम शेयर्ड आइडियल्स इन आवर country, right? So what also this means that spirit of federalism, okay, that is things like having diversity, sharing of power, living together, okay, are becoming the shared ideals. मतलब इसका मतलब क्या है कि ये सारी चीजें रखने के कारण भी हमारा फेडरलिज्म जो है काफी हद तक इम्प्रूव हो रहा है. और इस तरीके से ही हम लोग प्रैक्टिस कर पा रहे हैं क्योंकि हमने फेडरलिज्म या फिर डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है, पावर शेयरिंग करना, ओके, ऑलराइट, डिफरेंट डाइवर्सिटीज को, डिफरेंट डाइवर्स प्रकार के लोगों को अपने कंट्री में रखना, these are nothing but the basic principles of having a democracy or having a फेडरलिज्म, isn't it? And because we are keeping these basic principles, इसीलिए हम लोग जो है फेडरलिज्म हम प्रैक्टिस कर पा रहे हैं. ओके, आई एम टेलिंग यू वंस अगेन दैट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन रहने से फेडरलिज्म प्रैक्टिस नहीं होगा. ओके, सिर्फ एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन रहने के कारण भी फेडरलिज्म सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं होगा. रादर वी नीड टू हैव व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स which is there in our country, that is very very important. किस प्रकार की पॉलिटिकल सिस्टम है हमारे कंट्री में, that is very important for running a good federalism in our country. Okay, now let's move forward. There are three main important things on the basis of which we are running federalism in our country. Okay, let us begin with that. So there are three attributes which shows that how India practices फेडरलिज्म इन आवर कंट्री. फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स. ओके, लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब होता है वो सारे स्टेट्स, वो सारे राज्य, ओके, वो सारे स्टेट्स और ऑल दो स्टेट्स विच आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. ओके, ऑलराइट, जो सारे स्टेट्स जो अपने लैंग्वेज के आधार पर बने हैं उसे बोलते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स. दूसरी बात क्या है, व्हाट इज सेकंड थिंग, लैंग्वेज पॉलिसी. What kind of language policy are we following in our country? Even that is also very very important. And third one is center and state relation. What kind of center and state relations do we have in our country? Even that is also very important. When these three attributes are there, we can see that we are successfully following federalism in our country. Okay, well, these are the three attributes that we are following in our country. In different democratic country it might be different also, but of course I believe that these three should be there. Okay, how do you form the states in your country? What kind of language do you follow in your country majorly? Okay, and what kind of center and state relations do you have in your country? All of these things matters a lot.
let's now begin ahead. Now, before I go ahead, or before I move forward, okay, I would like to show you all the map scenario which was there in 1951 and currently in 2019. You can see. So in 1951, before reorganization of states, okay, once the time when we got independence, okay, Sardar Vallabhbhai Patel brought the initiative of reorganization of states, okay, उन्होंने फिर से states को एक अपनी ही अलग बनावट दी because of क्योंकि उन्होंने लोगों को अपने लैंग्वेज के हिसाब से उन्होंने सेग्रीगेट करके उनको अपने अपने अलग अलग प्रकार के स्टेट्स बना के दिए थे, राइट. सो यू कैन सी द वास्ट डिफरेंस बिटवीन दिस टू मैप्स कि हमारा 1951 में हमारा इंडिया का मैप कैसा लगता था एंड हाउ इट इज इन 2019, राइट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अभी हम आगे बढ़ते हैं. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं सिर्फ आपको दो एट्रीब्यूट्स बताऊंगा, दैट इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड लैंग्वेज पॉलिसी, और सेंटर स्टेट रिलेशनशिप जो है वो हम लोग आगे वाले मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे, राइट. Okay, let's move forward now. Yeah, linguistic states. Okay, linguistic states. Just now I have told you the meaning that language के आधार पर just states बनते हैं, उसे बोलते हैं linguistic states. अभी ये सारे जो चार points जो मैंने निकाले हुए, that is from the textbook only. But the thing is that you need to get explanation of this because this is completely a typical bookish language. So I'll be making it sure that I explain it to you in a better manner. So what is the first point which says the creation of linguistic states was first and the major test for democratic politics in a country. If you look at the political map of India when it began its journey in democracy in 1947 and that of 2017, you will be surprised by the extent of the changes. As just now you saw that, ठीक है, कि आपने changes देखा कि किस प्रकार के changes हो गए हमारे states के boundaries में, right. Secondly, many old states have been vanished and many new states have been created. Areas, boundaries and name of the states have been changed. Okay, कई प्रकार के नए states बने और कई सारे जो पुराने states थे उनको अलग states में convert कर दिया गया. Isn't it? Don't you think so? Yes. In 1947, the boundaries of the several old states of India were changed in order to create new states. Okay, कई सारे states की boundaries हम लोगों ने change करी थी ताकि हम लोग एक नया state form कर सके. This was done to ensure that people who spoke the same language remain in the same state, है ना. ये हम लोगों ने क्यों किया था, क्यों हमने बाउंड्रीज चेंज करी, क्योंकि जो सारे लोग जो पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं वो सारे के सारे लोग एक जगह पे रहे. फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस हम लोगों ने ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स का आइडिया लाया था, कंसेप्ट ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स लाया था. दिस वाज ऑल टुगेदर ब्रॉट बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन माइन ऑफ इंडिया. Then some states were created not only on the basis of language but to recognize the differences based on the culture, ethnicity and geography. कुछ जो states थे उन्होंने सिर्फ language के आधार पर नहीं but किस प्रकार का culture है, okay, कुछ cultures को की धरोहर को बचाने के लिए भी हमने states बनाए थे, right. These include the states like Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand. आप जैसे कि देख सकते हैं Nagaland, Uttarakhand, Jharkhand. You can see these states that see how what kind of different geography है उनकी. कुछ states में काफी अच्छे पहाड़ है. Nagaland very green state, isn't it? वहाँ का culture, वहाँ के tribes को बचाने के लिए हम लोगों ने we have formed that particular state, isn't it? So कुछ states जो सिर्फ हमने language policy के आधार पर नहीं बनाई, rather we also created on the basis of किस प्रकार की geography है, किस प्रकार का culture है, किस प्रकार का tradition है वहाँ पे, वो सारी चीजों को बचाने के लिए भी हमने states बनाए थे, right. Yeah, let's now move forward. Language policy. अभी हम लोग डिस्कस करते हैं what is the meaning of language policy. किस प्रकार की language policy हम लोग फॉलो करते हैं, क्या हमारी गवर्नमेंट हमें फोर्सफुली पर पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने के लिए बोलती है. Let us see all of that thing. A second test for Indian Federation is the language policy. Our constitution did not give the status of national language to any one language. This Hindi was identified as the official language, but Hindi is the mother tongue of only 40% of Indians. Okay, let us see, understand this thing. Okay, दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज अगर हमारे कंट्री के पास अगर कुछ था तो that was nothing but the लैंग्वेज. कौन सी लैंग्वेज को हम लोग कंसिडर करें, ओके, बिकॉज इंडिया वाज अ डाइवर्स कंट्री एंड देयर वर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ लैंग्वेजेस. बहुत सारी प्रकार की लैंग्वेजेस थी. सो उन सब में से किस लैंग्वेज को चूज करें. अगर हम गुजराती को चूज करते हैं तो ओनली गुजराती पीपल विल बी हैप्पी. व्हाट अबाउट द रेस्ट, इजंट इट? इफ यू चूज मराठी एज द नेशनल लैंग्वेज इट विल बी लाइक biased, isn't it? So there were variety of languages, so we had to choose something which was spoken in common, okay, and that was nothing but the Hindi. But even Hindi also was spoken only by 40% of the people, okay, of India, isn't it? वो तो 50% से भी ज्यादा नहीं है. मतलब
इवन हिंदी भी जो लैंग्वेज है वो भी मेजोरिटी में बोली नहीं जाती, इजंट इट? वो तो सिर्फ 40% लोगों के द्वारा बोली जाती है पूरे एंटायर इंडिया में, isn't it? Okay, but as compared to the other languages, हिंदी सबसे ज्यादा बोली जा रही थी, okay, in entire country. That's why we did not give any official status saying that कि ये हमारी राष्ट्रभाषा है or something like that. Okay, हमने उसको national language नहीं बना, but then of course हमने उसको official language जरूर चुना. Okay, so therefore हिंदी was identified as the ऑफिशियल लैंग्वेज. ओके, किसी भी प्रकार के दफ्तरी काम को ऑफिशियल काम के लिए हम डेफिनेटली हिंदी का इस्तेमाल जरूर करेंगे, बिकॉज हिंदी वाज कॉमन एंड इट वाज लाइक मदर लैंग्वेज फॉर मेनी ऑफ द पीपल. ओके, या and therefore there were many safeguards to protect the other languages. Besides Hindi, there are 21 other languages recognized as the scheduled language of the constitution. Okay, और हमारे constitution में ऐसा नहीं कि हिंदी को official language बनाया, that's why other languages were barred upon. Okay, ऐसा नहीं किया गया था. Okay, so what happened was there were other languages also. वहाँ पे उसके हिंदी के अलावा और 21 लैंग्वेजेस थे जिनको हमने प्रोटेक्ट करा है, और ये सारे 21 लैंग्वेजेस जो है इन सब का इस्तेमाल कोई भी इंडिया का जो स्टूडेंट है, कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम देना चाहता है, एनी स्टूडेंट हु वांट टू गिव एनी काइंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ही कैन चूज आउट ऑफ दिस 22 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी. ओके, फॉर अपियरिंग दैट पर्टिकुलर एग्जाम इन दैट लैंग्वेज, वो ये लैंग्वेज को चूज कर सकता है इन 22 में से. ओके, और वो पर्टिकुलर कैंडिडेट ही कैन गिव द एग्जाम. ओके, जो कि हमारे नेक्स्ट पॉइंट में ही लिखा हुआ है. ओके, विच सेज दैट अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशंस मे ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दिस लैंग्वेजेस. States to have their own official languages. Okay, so ये भी हमने हमारा ये भी बोलना है कि of course as a whole nation, okay, as a whole nation अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन आती है तो ये सारे 22 लैंग्वेजेस में से वो बंदा एग्जामिनेशन दे सकता है, प्लस पर्टिकुलर स्टेट के पास में भी उसकी अपनी ही खुद की एक लैंग्वेज है, उसकी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज भी रहेगी. ओके, इन दैट ऑल्सो ही कैन गिव द एग्जामिनेशन, बट ओनली ऑफ दैट स्टेट लेवल एग्जामिनेशन. ओके, विच इज कंडक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इट्स पर्टिकुलर स्टेट. Then much of the government work takes place in the official language of the concerned state. और जहां तक अगर हम देखा जाए, ओके, काफी सारा काम जो है एक पर्टिकुलर स्टेट लैंग्वेज में ही किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वी आर लिविंग इन महाराष्ट्र, आई एम लिविंग इन महाराष्ट्र, सो मोस्ट ऑफ द वर्क इन माई कंट्री, ओके, रिलेटेड टू द लॉ एंड ऑर्डर एंड एवरीथिंग, ओके, documentation process, most of the things are done in Marathi only, isn't it? Similarly same thing goes in Punjab, same thing goes in Kerala and so on, isn't it? So यही चीज होती है. Okay, and therefore ये दो चीजों को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए, because when we made the states on the basis of language, when we did not keep any kind of dispute in considering language policy, है ना, हिंदी को जब हम लोगों ने कंसिडर करा था तो हमने इस तरीके से कंसिडर करा था कि बाकी कोई स्टेट्स को बुरा ना लगे. सो when we are following these 2-3 things, okay, लैंग्वेज पॉलिसी, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, इसी कारण हमारा फेडरलिज्म जो है बहुत सही तरीके से काम कर रहा है, isn't it? So thank you so much for this video, for watching till here. I highly appreciate your dedication. Plus do let me know in the comment section how my videos are going on. Do you like it or not? If you like it, please do give a thumbs up and hit the subscribe button right away. And thank you so much. The remaining part I'll be discussing in the next module. This is Ritesh Chandekar signing off until we meet next time. Thank you and have a good day.